यहाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल मिस्ट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो लोग जगतगुरु आदि शंकराचार्य की बहुत जो उन्होंने शिक्षा दिया है अद्वैत वेदांत की, जो फैन हैं, बड़े तारीफ करते हैं अद्वैत वेदांत, शायद वो लोग ऐसा समझते हैं कि अद्वैत वेदांत जो है वही भारत की वैदिक सनातन धर्म का एसेंस है, सार है, अल्टीमेट ट्रूथ है, वो उससे आगे कुछ नहीं है। करीब करीब 98% 99% लोग ऐसा ही समझते हैं हिंदुस्तान में। उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, व्यास भगवान वेद व्यास जो शास्त्रों की, अगर भारत की सनातन धर्म के पिता कहा जाए तो भगवान तो दिए हैं, व्यासदेव भी वही नारायण जी के अवतार हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यासदेव की दिया हुआ ज्ञान सारी जगत में ये लोग ही फॉलो करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई माने या कोई ना माने। तो ही इज द फादर ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, लॉर्ड व्यासदेव। व्यासदेव जो हमको शिक्षा दिए हैं, जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल टीचिंग है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, द लिविंग एंटिटी, आत्मा इज एन इटर्नल सर्विटर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान की वो नित्य दास है, सेवक है, आत्मा परमात्मा की। भगवान से परमात्मा से आत्मा अलग कैसे हुआ, सेपरेट कैसे हुआ, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उसको मैं अगर शॉर्टकट में बताऊं कि भगवान पिता है और भगवान को कहते हैं अभिज्ञ स्वराट, मतलब जो स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी से कोई एडवाइस ग्रहण नहीं करते। भगवान जो उनकी मर्जी है वो करते हैं, अभिज्ञ स्वराट है, उनको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, सब कुछ वही है, सब कुछ उन्हीं से आया है, उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। वो जैसे बनाए हैं अपनी इच्छा से बनाए हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा पिता है, आत्मा अगर बेटा है, तो जो पिता का गुण रहता है वही बेटे में यानी आत्मा में वही गुण रहता है, क्वालिटी रहता है। अगर भगवान संपूर्ण स्वाधीन है, अभिज्ञ स्वराट है, तो जीवात्मा भी वही गुण, स्वाधीनता, इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट डिजायर वो जीवात्मा में रहता है। भगवान जैसे सृष्टि बनाए हैं, तो जीवात्मा भी कभी कभी ऐसा सोचता है, जब भगवान से उत्पन्न हुआ, एट द टाइम द लिविंग एंटिटीज, आत्माज वाज क्रिएटेड, पर्टिकुलर टाइम है जब आत्मा क्रिएट हुआ, भगवान से निकला। जैसे सूरज से किरणें निकलता है, सन से सनरेज निकलता है, जैसे भगवान से आत्मा निकला, उसको तटस्था शक्ति कहते हैं, मार्जिनल पोटेंसी। भगवान की अंतरंग, भगवान में 3 शक्तियां हैं मेन, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, और तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। तो तटस्थ शक्ति से अनंत अनंत लिविंग एंटिटीज क्रिएट होते हैं, और जब क्रिएट होते हैं उनका जो पोजीशन होता है, किस जगह पे क्रिएट होते हैं, जहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल कॉस्मोस एंड स्पिरिचुअल कॉस्मोस दे मीट टुगेदर। आपने समुद्र देखे होंगे, कभी कभी समुद्र का जो तट होता है, शोर होता है, कभी समुद्र आगे आ जाता है, पानी में वो तट जो है, शोर है, समुद्र का जो बीच है, पानी में, पानी उसके ऊपर आ जाता है, पानी के नीचे चला जाता है, फिर समुद्र कभी कभी रिसीड पीछे चला जाता है, तो बीच फिर सामने आ जाता है। तो जो तट एरिया है वो ना समुद्र है, ना स्थल है, ना जल है, या संपूर्ण रूप से स्थलभाग है, लैंड है, ना ही वो समुद्र का हिस्सा है। पानी आगे पीछे हो, समुद्र का जो लहरें हैं आगे पीछे होता रहता है, वो उसको कहते हैं बॉर्डर एरिया, सीशोर, तट। तो भगवान की जो तटस्थ शक्ति,
which divide material cosmos from spiritual cosmos. And in that border area, there is a river is situated which is called Biraja river. विगत ज्वर. भौतिक मटेरियल जगत में सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण होता है. There are three qualities, binding forces in material cosmos. These energies are called the mode of goodness, sattvagun, mode of passion, rajagun, mode of ignorance, tamagun. These topics are very well known in Hindu society. So the living entity was created in the near the area of Biraja river. Biraja, the ocean of Biraja. Biraja means Bigata Jara, a place where these three binding qualities, Sattagun, Rajagun and Tamagun, is not present. Only it is not fully material world, or neither it is fully spiritual world. The soul area, border area. Exactly in the same place the soul was created. For the first time, created is a wrong word. The soul, the Atmas, the living entities appeared by the desire, by the will of the Supreme Lord, Narayana, Vishnu or Krishna. At that time, the Lord gave the living entities an opportunity to decide for himself whether he wants to stay or whether he wants to go under the jurisdiction of Yogamaya, who creates spiritual world. Yogamaya, like Durga, Devi Durga, Goddess Durga is called Mahamaya. He is the presiding deity, she is the presiding deity of material cosmos. Similarly, Yogamaya is the goddess of Yogamaya is the presiding deity of spiritual universe, spiritual creation, Vaikuntha planets. So, an opportunity was given at the time, the first time the living entity appeared, that whether he desires or wants to go back under the jurisdiction of Yogamaya or Vaikuntha planets, or he wants to go under the jurisdiction of Mahamaya, Durga Devi. So the living entity is standing on the shore. On one side he sees the unlimited vast spiritual cosmos. Other side he sees similarly unlimited material cosmos. He is standing on the shore. One side he sees the sea, another side he sees the land. Now, by the effect of his independent desire, the Jivatma is in a position to take an independent decision. That capacity is given by the Supreme Lord to him, to the living entities. Those living entities desired to enter, to go to the jurisdiction of Yogamaya, they entered into the spiritual cosmos. They came under directly the guidance of Lord Vishnu or Yogamaya. They went to Vaikuntha Loka. They were eternal liberated living entities, souls, eternal liberated Atmas. Those living entities desire to, somehow or other, they became attracted towards the material cosmos, and they willfully entered, they willfully desire to enter into the realm of Mahamaya or material cosmos. They entered into the material world. And they came under the control of Durga Devi, Mahamaya. Why? Because as I have said to you, the Lord is Abhijñaswarat, the Supreme Lord is completely independent. He does not take advice or guideline from anyone. His Lord is supreme. He does whatever he wants. The same quality exists in the consciousness of the living entities. He also wants to be independent. He wants to do something independently. And those living entities desire to enter into the Vaikuntha planets. They went into the Vaikuntha planets.
And those living entities desire to enter into material cosmos by using their independent will, independent desire. They came under the jurisdiction of Mahamaya because they are standing at the tata, at the border area of material creation and spiritual creation. The living entity saw both. On one hand, he saw the spiritual world, is very attractive. On other hand, he saw the material cosmos, which was also equally very attractive. So it is the living entity desire, independent desire, that is responsible for his entering into Vaikuntha planet or entering into material planets, material creation. And when the living entity first time entered into the material creation, then he was bound by the energy of Yogamaya, Satagun, Rajagun, Tamagun, lust, anger, greed, enviousness, etc., etc. And he travels in the 84 lakh journey, the 84 lakhs of different species in this material cosmos, according to his karma, good karma or bad karma. So living entity is the living entity is solely responsible for his condition in this material world. God has nothing to do with it. He has given independent willpower. I think the people who is watching this episode can understand something. It is very high topic, very, very highly spiritual mysteries. Not everybody can understand it. So please try to understand it. This is the essence of spiritual science. This is called the evolution, Vivartavad, spiritual teachings of Lord Vyasadeva, Lord Chaitanya Mahaprabhu. On the other hand, what Jagadguru Adi Shankara teaches, he has given us a completely distorted version of this spiritual evolution, Vivartavad. What Lord Shankaracharya has said, Adi Guru Shankaracharya has said, that when Brahma is captured by Maya, some portion of Brahma, when it is captured by Maya, it is called Jivatma, Jiva Brahma. So Brahma became divided by some external potency and created, the living entity was created. And when that Maya is eradicated, destroyed, then the living entity again will become Brahma. This is completely against Vedic spiritual science, because Eka Brahma Ditya Nasti, except the Brahma, nothing else exists according to the philosophy of spiritual teaching of Adi Shankaracharya. If nothing exists except Brahma, Eka Brahma Ditya Nasti, then from where this Maya came? And if Maya is able to cover some portion of Brahma, then that is not Brahma. Another thing is that Maya is more powerful than Brahma. This is completely wrong. This is against spiritual science. Nothing can cover Brahma. And when the Jiva was Brahma, he was covered by Maya and became living Brahma, Jiva Brahma. At the time when he was actually Brahma. And Maya divided it from the original Brahma. And now he has already become Jiva Brahma. Then how can you fight with Maya? The Maya which can cover Brahma and create Jiva Brahma, how can the Jiva Brahma, which is separate from Brahma, can eradicate that Maya potency which has covered him by doing some kind of meditation or some spiritual sadhana? It is impossible, because meditation is done by the power of mind. Mind is material and Brahma or Maya is spiritual. So how can the Jiva Brahma, by using mind, by doing meditation, which is material, can eradicate something which is infinitely powerful, which is called Maya, and which has divided Brahma into two parts, Jiva Brahma and Brahma, Supreme Brahma. A potency which can divide Brahma, and once it divides, the Jiva Brahma becomes something limited and Maya covers it. How can the Jiva Brahma eradicate the forces Maya, which has the potency, which has the power
to cover even, to divide even Brahma, which is intact, which is inseparable, which is the eternal force, with spiritual potency, Eka Brahma Ditya Nasti, which cannot be divided, but still it is divided by Maya. This is word jugglery, this is illusion, which was created by Jagat Guru Adi Shankaracharya to puzzle the mind, to create confusion inside the mind, inside the brain of Buddhist, and somehow or other capture their mind and bring him back to the fold of Vedic Sanatan Dharma. That is the reason intentionally Jagat Guru Adi Shankaracharya, who was the incarnation of Lord Shiva, created such kind of illusion and confusion and bring back the misguided Hindus who had adopted Buddhism into the fold of Vedic Sanatan Dharma. That is the reason we highly respect Jagat Guru Adi Shankaracharya. He is the incarnation of Lord Shiva. Sankaraha Sakshat. Adi Guru Shankaracharya is none other than Lord Shiva himself. Sankaraha Sakshat. Vaishnavanam Jatha Sambhu. He is the number one devotee, topmost devotee of Lord Vishnu. But he did his service, which was given, the order was given by Lord Vishnu, you go and capture the mind of these misguided Hindus who has accepted Buddhism, and again bring back to him by force or by trickery, by some kind of trick, by Chala Dharma, into the fold of Vedic Sanatan Dharma. Yadasdahi dharmasya glanirvati bhavat abhyuttha adharmasya tadatmanam sajamyam paritrana sadrat. According to the slokas, whenever the original Sanatan Dharma, the principle Sanatan Dharma declines and irreligion rises up, spread in the society, it is the Supreme Lord. He decides according to time, place and circumstances what should be done in this particular situation. Accordingly, he makes some plan, and he gives some duty, some service to some demigods like Shiva or Brahma or Indra. He gives order that you go there, you do this and this to establish the original principle of Sanatan Dharma. That is the responsibility of Eternal Father. Who is Eternal Father? Lord Narayana. So whatever Shankaracharya has done, that is called circumstantial religion. He did something 2000 years, 2500 years ago to establish Sanatan Dharma in a different way, in a cheating way, in a duplicitous way, not to fool the Hindus, but to attract the Buddhists who had accepted Buddhism. That time is gone and that method is gone. Now, you cannot apply the same method which Jagat Guru Shankaracharya adopted at that time, 2500 years ago, in the present condition. It is not necessary. Those people who are following the principles of Adi Shankaracharya, Mayavada principle, they are completely misguided. They don't know Sanatan Dharma. They don't understand the situation. They are following blindly. They are uneducated, foolish people. They don't make a comparison study. They don't try to understand the spiritual teachings of different spiritual masters. 99.99%, they are stupid, ignorant people. Somehow or other, they have become a little bit religious, and it is very easy for them to understand, I am Brahma. Supreme Brahma is there, the Maya Shakti. If I will do some kind of meditation, I will be able to eradicate the evil force of Maya and I will become a Brahma. Very simple. Within 1 hour, you can understand this. They don't have the power, brain power, to understand the real spiritual science. This is the way, on the pretext of Advaita Vedanta, they hide their ignorance, their inability to understand Vedic Sanatan Dharma. I am staying in Haridwar, Rishikesh, in Uttarakhand the last 15 years. I know. Most of them are, you can say them, beggars. Bhagwa beggars, afternoon beggars. To fill up their just belly, to acquire roti, kapda, makan, food, shelter, clothing, which are the basic needs of a human being, to survive in this world.
These uneducated fellows having beggarish mentality, they have accepted saffron dress and staying in some kind of ashram and involved in all kinds of politics, nasty politics. They have become chamchas, flatterers of some political party, directly or indirectly they are involved, associate with different kind of political parties. The political parties give them money and they live in a very comfortable life. And they don't allow people like me who dare to speak, who are little bit educated. We know the spiritual science. They hate us. They think that we are proud, we are this, we are that. They just stamp on a logo on us. They give us a designation that this man is very proud, this man is egoistic, he does not give respect to other fellow sadhus. You know, they create misunderstanding. They propagate this. They have their own agenda. So they are involved in this kind of mischiefs because they are crooked, they are evil-minded, stupid fellows, ignorant, uneducated. This is the present situation of inside every ashramas or mathas or so-called religious organizations. Big organization, big politics. Small organization, small politics. This is happening everywhere. And this is the downfall of Hindu Vedic Sanatana Dharma. And this is creating confusion among the Hindus. And as long as they will not accept their fault, their mistake, what they are committing against themselves and against Hindu Sanatana Dharma, Vedic Sanatana Dharma, so long, I don't think Sanatana Dharma will be ever rise again or revive its lost glorious past or lost glory. It is nearly impossible. So my humble request to the people like Jesai Deepak or Sudhanshu ji, please try to understand this. Study the philosophy, deeply study the spiritual teachings of Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimacharya, Adiguru Shankaracharya, Vallabhacharya, and make a comparison study, analyze all these things. Itself, one life is not enough. If you will have the mercy of the Supreme Lord, if you will have mercy of the bona fide spiritual, self-realized spiritual masters, then in this life you will be able to extract the essence of Vedic spiritual science. Your life will be successful. It is not so easy. It takes life full time. I was reading 15 hours, 16 hours, 18 hours every day when I was a brahmachari. Till today I am reading. I continue my study. And for this, I also face so many obstacles, problems. No ashramas allowed me to stay. Nobody gave me a shelter because they become very irritated when I spoke all these spiritual truths. They cannot understand. They don't have that capacity, intellectual capacity. It is very difficult. You have to fight and fight and fight. Nobody will listen to you. Most of the people, 99% people are affected by the spiritual teachings of Jagadguru Shankaracharya, Nirakarvad. God is impersonal, some kind of energy, this, that, and adding to this confused state of mind of the general class of people. These modern yoga gurus, they have another evil force, another struggle. They are creating more obstacles, more problems. They are creating more confusion, confused state, more confusion in the society. People are completely puzzled. They don't know what to do. Like Jagu Vyasudev, Sri, this, that Guru, this Guru, that Guru. They are very famous. They speak in English. They speak in such a beautiful way, marvelous way, and they use such ornamentical words, and they are so clever. It is nearly impossible for ordinary people, even educated people, highly educated people, to discriminate what is actually happening, what is the original Vedic spiritual science, and what these gurus are teaching. That is all. Whether it is right, this guru's teachings is right, or real original Vedic spiritual science is right. They don't know anything.
And these gurus, they speak in such a way that it is impossible nearly to discriminate what is true, what is false. So this is the effect of age of quarrel, Kali Yuga. This is called Kali Yuga. This is the reason this age is called Kali Yuga. People will be misguided. They will be dull-minded. They will have no time to understand all these things because these are very highly elevated topics, spiritual science. So not everybody can dedicate his life fully to understand this spiritual truth because they have their family, their profession, their job. They have to take care of their wife, children, etc. So it is nearly impossible. This is the problem. But if somebody who is dedicated, who is actually courageous, dedicated, he does not have to leave his home. He does not have to accept renounced life. He does not have to become a sannyasi to understand this. But somehow or other, if someone's heart is pure and he genuinely wants to know the truth, someone is interested to know the truth and he tries to pray the Supreme Lord because the Supreme Lord is our Father. And if he prays really from his heart that, oh my Lord, you are my Father, please show me the proper way, show me guideline. I want to know you. I am misguided. I am an unfortunate person. I don't know what to do. What is right, what is wrong. Please guide us. If someone deeply pray for this, the Supreme Lord who is sitting in our heart, Sarvasya Cham Hrudi Sannivishta, Arjuna, I am sitting in everybody's heart, is living entity's heart. The Lord will guide you. And that is the only way. That is the only way. There is no other way. That the mercy of the Supreme Lord and the mercy of bona fide self-realized spiritual masters, a person cannot, and if a person is sincere, dedicated and honest, then only the truth will be revealed in your heart. This is the process. There is no other process. So I hope intelligent and highly educated people like J.S.I. Deepak or Sudhanshu ji, they will listen my words, listen and consider what I am saying here. All these things, what I have said, they will consider it carefully and decide yourself whether I am telling right or wrong, right things or wrong things. And then if you think that there is some truth in my words, then you can try yourself. You read the scriptures written by different acharyas and make a comparison study and see yourself whether I am telling true or false. So this is my request, humble request. Now the discussion is over, the debate is over, and thank you very much to Sudhanshu ji for describing the Tattva spiritual truths of Ma Durga. The Chamundi, he described Shailaputri, Chandraghanta, Prathame Chandraghanta like this. These are very interesting to hear. I will watch this video again and again to understand this Chandraghanta, Shailaputri, this, that. Very interesting topics. And J.S.I. Deepak, as usual, very brilliant, exceptional, and he gave right answer, response to these liberal communist Makle Putras and Putris. Many thanks to him. Now the debate is over and the question answer session has begun. So I have 1, 2, 3 points we will discuss and we will end this episode. So please wait a while. So someone said Hindutva has moved from Golwalkar to Jati Nrsimhananda. हाँ, ऐसा होना चाहिए. भारत की हर डिस्ट्रिक्ट में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर सोसाइटी में एक जति नरसिंहानंद होना चाहिए. तब सनातन धर्म बचेगा. नाउ हम डिस्कशन करेंगे ये जो लेडी जज था, जूरी था, मृदुला मुखर्जी,
लास्ट में वो अपना जजमेंट देते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मृदुला मुखर्जी सेइंग आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द अपोजिट साइड, मीन्स जो सुधांशु और जय दीपक जी साइड में थे, कंप्लीटली दे रिड्यूस द डिबेट टू इलेक्शन कैंपेन, सच लार्ज ऑडियंस इज वेरी रेयर। तो मृदुला मुखर्जी कहते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतने लोग यहाँ हैं, और ये जय साई दीपक जो है सुधांशु जी हैं, पर्टिकुलर सुधांशु जी, वो तो इलेक्शन कैंपेन जैसा भाषण दिए। मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि डिबेट इतना नीचे के स्तर पे आ जाए। नहीं, मृदुला मुखर्जी, यू आर रॉन्ग। वॉट एवर इज सेड बाय स्पोकन बाय जय साई दीपक और सुधांशु जी और सपन दा, दे आर स्पोकन इट अकॉर्डिंग द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। जो माहौल था, जैसे लोग थे, जो उनका कॉन्शियसनेस था, उसी हिसाब से उन्होंने बिल्कुल 100% परफेक्ट रेस्पॉन्स दिया है, बोला जो बोलना चाहिए था वही बोले। तो इसलिए तो वहां 50-50 हुआ ना। अभी 50% लोग ऐसे लिबरेटेड कांग्रेस चामचों को सपोर्ट करते हैं, तो इन लोगों को क्या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्यादा हाई टॉपिक बोलोगे आप? ये तो है भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात हो गई। तो मृदुला मुखर्जी, यू आर रॉन्ग। डिबेट डज नॉट डिपेंड अपॉन लार्ज स्मॉल, यस। तो ज्यादा ऑडियंस ज्यादा है या कम है वो बड़ी बात नहीं है, जो वहां लोग बैठे हैं उनका कॉन्शियसनेस किस लेवल में काम करता है, व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मैटर, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये मृदुला मुखर्जी है, बार बार वो बोलती थी सिटिंग इन बंगाल, सिटिंग इन बंगाल, सिटिंग इन कलकत्ता, सिटिंग इन बंगाल। ये क्या बंगाल बंगाल लगा रखा है? ये जो डिबेट हो रहा है आज की जमाना, इंटरनेट की ये जमाना है, ये जो भी डिबेट होता है पूरी अभी ये डिबेट इंडिया की पूरी वर्ल्ड में डिस्कशन होगा। बहुत सारे चैनल है इस तरह की डिबेट को एनालिसिस करते हैं, इंडिया के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, सब सुनते हैं उससे। तो बंगाल बंगाल करने से क्या, सिटिंग इन बंगाल, सिटिंग इन बंगाल, तो महाराष्ट्र क्या कम है क्या? यूपी क्या कम है? या बेंगलुरु क्या कर्नाटक कम है? धर्म की जो इस तरह की डिबेट की जो कहां कहां होता है, हर जगह होता है इंडिया में, पूरा भारतवर्ष में हर जगह डिबेट चलता है। जगन्नाथपुरी इंपोर्टेंट है, अपनी जगह फेमस है, रामेश्वरम फेमस है, मुंबा देवी फेमस है, माँ काली की फेमस है, और आसाम फेमस है कामाख्या मंदिर के लिए। भारत का ये भूमि ही पवित्र भूमि है, वेद भूमि है, हर जगह का अपनी अपनी महत्व है। और काल्टा सिटिंग इन कलकत्ता, सिटिंग इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या वेस्ट बंगाल है? वेस्ट बंगाल के लोग अच्छे होते हैं ना तो 50% सपोर्ट नहीं करते ऐसे लिबरल कांग्रेस चामचों को, माकले पुत्रों को, डिसेंडेंट्स ऑफ माकले। अभी अभी बंगाल फाइल रिलीज हुआ, फिर भी इनको अकल नहीं आया। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जय कामाख्या, ये जो जय साई दीपक ने लास्ट में बोले ना, उसको भी ये मृदुला मुखर्जी ऑब्जेक्शन कर रहा है। ये अननेसेसरी था, इसको बोलना जरूरी नहीं था। क्यों बोले उन लोगों ने? तुम्हारे लिए अननेसेसरी है। भारत की सनातन धर्म वेद भूमि भारत के लिए अभी यही नेसेसरी है, इसी की जरूरत है। ये मृदुला, पता नहीं कहां से मृदुला मुखर्जी, इडियट टाइप का, मैंने देखा था उसकी बोलने की स्टाइल और किस तरह से बात करती थी वो, चालू टाइप का जो आदमी होता है ना, ये सही है मृदुला मुखर्जी। हाँ, वो ये भी बोल रही है कि हर जय श्री राम, जय कामाख्या, जय मां दुर्गा तो बोले सभी, जय हिंद कोई नहीं बोला। अरे पूरी डिबेट में ही कंप्लेन हो रहा है कि जय हिंद जय हिंद, हिंद नाम का कोई नहीं है, ये सिंधु था, सिंधु से हिंद हो गया, वेद में हिंद नहीं लिखा गया है। ये तो ये सब ये ऑपोजिट पार्टी वाले मणिशंकर वाले ऋचिका शर्मा कंप्लेन कर रहे हैं कि हिंद कोई नाम नहीं है, सिंधु को हिंद हुआ है, अपभ्रंश है, डिस्टोर्टेड वर्सन है। तो आपको उनको ब्लेम करना चाहिए था कि हिंद है। और जो बोल रहे हैं अगर सदियों से, बहुत दिनों से नाम चला आ रहा है, तो क्या गलती है उससे? हिंदुस्तान ठीक है, वो बोलते हैं उनका प्रॉब्लम है, नाम तो नाम होता है, बदल जाता है। तो उनको बोलना चाहिए था कि सिंध हिंद हुआ है तो हुआ है, तो हमको अगर कोई हिंद बोलता है समझना चाहिए कि हिंदुस्तान है, इसमें कंप्लेन ऑब्जेक्शन की क्या बात है? उनको पॉइंट आउट करना था। ये मृदुला मुखर्जी जय साई दीपक सुधांशु जी को बोल रही है, ये बोलना आपने कोई जय हिंद नहीं बोला, तो क्या जय हिंद खाक समझेंगे बंगाली?
जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये बंगाली लोग गाली देते हैं, मुझे मालूम है कितना सम्मान करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये बंगाली लोग, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये मियाओं के साथ रहते रहते इनकी दिमाग ही गंदा हो गया, ये बंगालियों की अकल की अंधे है कहीं के। जय हिंद कहना ना कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विवेकानंद जी के बारे में और खास करके मुद्रा मुखर्जी ये पॉइंट आउट कर रहा है कि विवेकानंद जी के बारे में जो कुछ बोला गया है, खास करके सुधांशु जी बोले हैं या जय साई दीपक बोले हैं, ये सब रॉन्ग है, गलत है। मृदुला मुखर्जी ये बोल रही है, उसको लगती है, इस औरत को लगता है कि शायद विवेकानंद के बारे में सिर्फ वही अकेली जानती है, दूसरे लोगों को पता नहीं है। तो किसी दिन एक काम करो, ये लेडीज को बुलाओ और उसको बोलो कि विवेकानंद के बारे में तुम क्या जानती हो, तो बोल के देखो, और मैं तो जरूर सुनूंगा इस ये को, तो मैं तो उसका जवाब दूंगा तुमको। तुम क्या जानती हो विवेकानंद के बारे में, थोड़ा बता के दिखाओ। महात्मा गांधी नेवर गिव अप हिंदुइज्म। व्हाई सुधांशु पार्टी डिड नॉट डिमांड भारत रत्न एक्सेप्ट सावरकर। मृदुला मुखर्जी बोल रही थी महात्मा गांधी कभी हिंदुइज्म छोड़े नहीं। महात्मा गांधी तो महात्मा तो है नहीं, दुरात्मा है, नीच आदमी है, अंग्रेजों की चमचा था, गुलाम था, दलाल था, नीच था, देशद्रोही था, पाखंड था, विश्वासघाती था। तो वो हिंदू धर्म से तो कोई लेना देना था नहीं उसको। हिंदू धर्म में कोई आदमी अपनी पोतियों के साथ नंगा सोता है क्या, ब्रह्मचर्य का पालन दिखाने के लिए? ऐसे राक्षसों को अब वो महात्मा है वो? ये मृदुला मुखर्जी तेरी समझ में आता नहीं, अकल की अंधी बूढ़ी हो गई हो, इतने उम्र हो गया है फिर भी अकल नहीं आया अभी तक। और सुधांशु जी की पार्टी मतलब बीजेपी भारत रत्न क्यों डिमांड नहीं किया सावरकर के लिए? डिमांड नहीं किया। अब बीजेपी कोई दूध की तो धूली नहीं है, पहले सबसे बड़ी बात है। और फिर ये लोग नहीं, वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये लोग भारत रत्न दिए हैं, ये भी बड़ी बात है। बाकी भारत रत्न जो, जहां तक का सवाल है भारत रत्न का, ये आज की तारीख में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, विवेकानंद को भारत रत्न देना भी ये भारत उनका अपमान होगा सुभाष बोस का। आजकल तो सड़क छाप, कोई भी सड़क छाप, टपोरी, गुंडे, मावाली तलुए चाट के, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नेताओं की तलुए चाट के भारत रत्न ले लेंगे। जो जितना बड़ा चापलूस है, तलुए चाटने वाला है, उसको सब कुछ मिल जाए, भारत रत्न मिल जाएगा, नोबेल प्राइज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं। ईश्वर चंद्र को भारत रत्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता के लोग उनको भारत रत्न के लिए डिमांड किए हैं। पता है कलकत्ता के बंगालियों को ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है? किसने डिस्कस किया उनके ऊपर? भारत रत्न प्रभुपाद हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत रत्न हैं। राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित भारत रत्न हैं। सुशांत सिंह राजपूत भारत रत्न है। तुम जैसे नीच हिंदू कायर नपुंसक हिंजड़े सुशांत के लिए तो कुछ का, उसको तो न्याय भी नहीं दिला सके। भारत रत्न, ये चाय वाला जो नरेंद्र मोदी है, इसको भी भारत रत्न मिल जाएगा। अभी सारे बदमाशों को ही भारत रत्न मिलता है, ये इसकी कोई भारत रत्न कोई वैल्यू नहीं है। मुझे अगर भारत रत्न मिलेगा ना, मैं फुटबॉल को ऐसे लात मारता, उसको लात मारूंगा, वो जाके सीधा जाके चाय वाले के मुंह पे लगेगा वो। भारत रत्न, ये 2 कौड़ी के ये भारत रत्न से तो मेरे लिए बियर बॉटल ज्यादा कीमत रखता है। कोई मुझे बियर बॉटल देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। भारत रत्न लेके क्या चबाऊंगा उसको लेके? और भारत रत्न अगर किसी को, अगर कोई ओरिजिनल है तो उनका नाम भी मैंने लिस्ट किया है, पढ़ के सुना देता हूं। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, नेताजी, भगत सिंह, कुट्टी अम्मा, अभी जो जड़ी बूटी, जो पूरी जिंदगी लगा दी जड़ी बूटी खोज करने में, प्रभुपाद, भक्तशिला प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य इस्कॉन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महाराज रणजीत सिंह, गोस्वामी तुलसीदास, राजीव मालहोत्रा, द स्नेक्स इन द गंगा, अभी जो लिखे हैं, अभी जो फाइट कर रहे हैं, अकेला फाइट कर रहे हैं पिछले 50 साल से,
जगतगुरु आदि शंकराचार्य, सम्राट विक्रमादित्य, पुरु महाराज जो अलेक्जेंडर को धूल चटा दिए, कुत्ते की मार 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 के भगाई यहां से, कुत्ते की मौत मारा। रामानुजम मैथमेटिशियन, डॉक्टर पी एन ओक, दुनिया में इतिहास कौन लिखा है तो मैं डॉक्टर पी एन ओक को मानता हूं, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। और उन्होंने भी स्वीकार किया अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि बड़ाई अपनी बड़ाई की। उन्होंने लिखा है कि कोई एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो मुझे प्रेरणा दिया। कि जो आदमी एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जो आध्यात्मिक साधक है, अपने जीवन में उसने कुछ अनुभव किया है स्पिरिचुअल शक्ति क्या होती है, वही आदमी उनकी बात को समझ सकता है। A genuine spiritual master can understand the feelings of another genuine spiritual master, self-realized person. आंडू पांडू आयरम गैरम क्या समझेंगे? अब मीराबाई भगवान कृष्ण का दर्शन किया, गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के दर्शन किया। अब वो कितने लोग उनको समझेंगे कि उन्होंने क्या दर्शन किया? कोई भगवान राम तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देते ना, मैंने दर्शन किया, ये सर्टिफिकेट लो, स्टाम्प लगाओ, गवर्नमेंट का स्टाम्प लगेगा, चाचा 420 लगा स्टाम्प मारेगा प्राइम मिनिस्टर, लो सर्टिफिकेट दिखाना पब्लिक को, दर्शन दिया था। ऐसा होता है क्या? तो इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न है। तो ये हो गया, इतना ही था डिबेट में। और फिर से तो यही हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। और सीडीसी को धन्यवाद कि इस तरह की डिबेट उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। और मैंने जो कुछ ये इस एपिसोड में मैं जिस तरह से मैंने बात किया हूं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, मैंने बहुत बार बहुत हार्श वर्ड यूज किया है, इससे मेरा एक बोलने का तरीका है, मैं बोलता हूं, तो मुझे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स, बट आई कैन नॉट रिस्ट्रेन माई सेल्फ। वॉट एवर हैपनिंग इन इंडिया, in Bharat, it is very painful, it hurts the heart. So इसके लिए माफी चाहता हूं। और इस तरह की डिबेट हमें आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट में, गली गली, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में से डिबेट होना चाहिए। और मुझे भी कभी जीवन में कि मैंने आश्रम बनाया, उस काबिल बना, तो मैं भी डिबेट अरेंज करूंगा। स्कूल बच्चों को, स्कूल में, कॉलेज में गीता की श्लोक का कंपटीशन होना चाहिए। कौन कितना गीता का श्लोक रिसाइट कर सकेगा, गीता के ऊपर 15 मिनट गीता पढ़े, गीता का एसेंस बताओ 15 मिनट में, 10 मिनट में, कंपटीशन होना चाहिए। और भारत की जो ओरिजिनल इतिहास है, जैसे मीनाक्षी जैन इतिहास किताब लिखे हैं, तो कंपटीशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन अभी एक नया किताब लिखे हैं, 15 दिन टाइम दिया जाएगा, 1 महीना टाइम दिया जाएगा डिबेट के लिए। तो उसी किताब के आधार पर डिबेट होगा कि ये जो मीनाक्षी जैन लिखे हैं किताब, या जय दीपक लिखे हैं, उसका एसेंस क्या है, सार क्या है, तो उसमें डिबेट होगा। एक पर्टिकुलर बुक्स के ऊपर, किताब के ऊपर सबको 10-10 मिनट मिलेगा। पब्लिक रोल, उन जो जीतेंगे डिबेट में, जो अच्छे बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको कुछ अवार्ड भी, इनाम भी देना चाहिए। इसमें लोग एनकरेजमेंट मिलता है। जो बेचारा इतना मेहनत किया, पढ़ाई किया, डिबेट के लिए प्रिपरेशन किया, कुछ पैसा मिलेगा तो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट को, तो वो भी, उनको भी खुशी होगी, वो भी ज्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूचर में। मनी इज एवरीथिंग नाउ इट इज, विदाउट मनी यू कैनॉट डू एनीथिंग। सो ये सब ऐसा होना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड पार्डन मी फॉर माई हार्श वर्ड्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा, जय मां कामाक्षा, जय श्री राम, हरे कृष्ण एंड जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभु, हरे कृष्ण, हरे को।